देख आसला वॉइस आसला हाँ तुम कनेक्ट होपट तो लाइव स्टार्ट हो गला वॉइस आसुना वॉइस आसुनी हाँ आसला तो वॉइस ये पूरा सिग्नल देखला वॉइस आसला वॉइस आसला तो ओके ओके आसला वॉइस तो हाँ आउ थे कली पूरा सेटा एड कर आउ थे फोन लाइन दे सारे हाँ आउ थे दियो 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 श्रुति कनेक्ट है श्रुति तुम आठ बाहर को जाकि कहबनी मोर डाटा सरीगला आबसेंट पड़े मत दोष दबनी कहीदे गेट रेडी कारण तुम जहाँ कौन आडजस्टमेंट कर मैनेज कर सब कर तुम से कोअपरेट न कर तुम आबसेंट लगे मत दोष दबनी तुम सुविधापी जेहेतु तुम बाहर की सब ट्रिप करुच आज जड़े पड़े 2 दिन पर तुम जीव काली सका आउ कि बाहर मुझे मैनेज करी किंतु कम से कम चैनल तो मत आटेंडेंस दब ना नहीं मुझे आडजस्ट कमी करी पिला प्रेजेंट अच्छा है तुमको जावाक मना करनी कि जितटा संभव तो सेतिकटा करहब ना ओके आसला समस्त थोड़ा ऑडियो आसुनी आसुनी आउ थे पूरा से कौन वॉइस आसला काटिक आउ थे पुणी कली आउ थे पठे दियो जन करो दे दीजिए डाटा दे दीजिए ओके आई थिंक बर्तमान ऑडियो वीडियो समस्त आसूची जो पिला मैंने ऑनलाइन रे जॉइन करना इमीडिएटली जॉइन कर योर नेम एंड रोल नंबर क्विक दियो ठीक अच्छे कैमेरा दियो फोटो नहीं जाए जोटा कि बस समस्त ओके हाँ भर का दे दियो तुम बस जाओ यपट जड़े आस फोटो नहीं गले समस्ते आसवे
हाँ मैं कहीदे से भर को तुम सब सेटिंग कर दिए से जड़े आस खाली क्लिक करदेव ओके आउ किए बाकी रहे ओके एपटू ना समस्ते एपट को फेस मो फोटो दरकार नहीं मो फोटो पचर चलो पिला फोटो दरकार तुम बस से एका तो गोटे फोटो नहीं जो सरला अच्छे तुम फोटो कहीं मेरा कैसे लाऊंगा? अरे तुम से किसको बोला तो तुम बैठ जाओ फोटो दे देगा सेटिंग कर दे दो ओके आसिले समस्ते ना कि बाकी रहे तुम है श्रुति कनेक्ट कनेक्ट है तो हाँ दियो दियो रोल नंबर दियो जल्दी क्विक कहीं पठेल श्रुति रेखा साहू 100 ओके ओके गुड मॉर्निंग आउ कि बाकी रहे क्विक टिके सांग मान को जना जल्दी जॉइन करंतु लेट करछुंती अरे वो सुना सुना ओके 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 मु टिके ऑनलाइन क्लास जो स्टार्ट करू हाँ संध्या टे आस हाँ है ओके स्टार्ट करवा कारण ऑलरेडी 10:30 हो गलानी देख आज तुम आमर जो आजिकार मेन चैप्टर है तुम एआई एआई सांगे आम सोशल मीडिया मार्केटिंग को आम इंटीग्रेट करुचे प्लस ता सागे कंप्यूटर ग्राफिक्स को भी इंटीग्रेट करुचे तो दुईटा पार्ट डिस्कसन हम जो मूल टिके अलरेडी पॉइंट आउट कर दी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तीन टा प्राइम प्रोग्राम अच्छी समय जान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओके शुण ये तीन टा प्रोग्राम किछिटा बेसिक पार्ट आम डिस्कसन करवा नॉट एवरी पर्सन आम कवर करा दरकार नहीं यहाँ मुझे मेन की पॉइंट कौन तुम वार्ड रे सब जो ड्राफ्टिंग कर तुम नॉर्मली ड्राफ्टिंग कर तुमको जी समय लगुच तुम ताकू जब एआई सांगे इंटीग्रेट कर तुम निजे फिल कर तुम जॉब रो स्पीडटा केते दूर इम्प्रूवाइज होती पावर पॉइंट रे तुम पावर पॉइंट नॉर्मल प्रेजेंटेशन 10टा स्लाइड कर कि 15टा कि 20टा स्लाइड कर थीम नौ कॉन्सेप्ट नौ ताकू डिजाइनिंग कर बैकग्राउंड चेंजेस कर टेक्स्ट लिखुच मल्टी कलर कर संगे एनिमेशन पकाउछ बैकग्राउंड म्यूजिक दौच एक्सेट्रा एक्सेट्रा इट रिक्वायर्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम बट जदि तुम एआई सांगे इंटीग्रेट कर सम मिनिट्स हंड्रेड्स ऑफ स्लाइड्स कैन बी इजिली क्रिएटेड 100 स्लाइड गोटे मिनिट तुम या बाहर कर सब ऑफकोर्स तुम ऑनलाइन काम हम कि जो तुम तीन टा कॉन्सेप्ट पढ़ुछ जहाँ भी कर एआई ऑनलाइन भी काम हो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन भी काम हो प्लस तुम कंप्यूटर ग्राफिक्स हाई एंड डिजाइन काम कर सी भी तुम ऑनलाइन भी काम हम हम तेणु आज आम वार्ड रोटे छोट बेसिक पार्टा मुझे स्टार्ट करुँ वार्ड किछटा पॉइंट है आम एक्सेल को जीवा तापर आम पावर पॉइंट को जीवा तापर 1 बाय 1 ताको एआई सांगे आम लिंक अप करवा सो स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आम कोर्ट को आसे प्रथम स्टार्ट मेनू आसु जो मैंने क्लास अटेंड कर तुम रफ नोटबुक काढ़ जहाँ जहाँ तुम पढ़ा हो सर्टकट्रे से नोट कर कारण भेरी सुन तुम डायरी मेंटेनेंस स्टार्ट हो तुम डायरी रे एवरीडे एक्टिविटी तुमको कारण दैट इज योर ओनली एविडेंस जे तुम क्लास अटेंड करुच एवं एक्टिविटी रे पार्टिसिपेट भी कल ओके तेणु आजिका डेट दे दियो डेट एंड टाइम प्लस जहाँ जहाँ आज मुझे तुमको लर्न करेबी
ताकू सर्टकट रे तुम तुम अनुसार मार्किंग कर दियो ओके कारण मोर बेसी इतिहास लिखा दरकार नहीं जमी तुमको मन रखा सुविधा हम से अनुसार मार्किंग करके प्रोसीड कर ओके सो रफ खाता छाड़ तापर डायरी केमती लेखा हम सेटा भी तुमको डेमोन्स्ट्रेशन देवी डायरी माने तुमर एना खाली रफ नोट रे समस्त लेख आमर डायरी गोटे स्पेसिफिक फॉर्मेट अच्छी से फॉर्मेट समस्त को डिस्ट्रीब्यूट करा हबो तुम डायरी डेट अनुसार प्रतिदिन एक्टिविटी मेंटेन कर फाइनाल जो तुम कॉलेज रे रिपोर्ट सबमिट कर विथ डायरी कारण बिना डायरी तुमको सर्टिफिकेट मिल ना हाँ पूरा हार्ड कॉपी डायरी दवा पड़ो मो डायरी गोटे छोट सैंपल खाली देखिए दूसरी हैंड रिटन ऑफ कोर्स हैंड रिटन कारण तुमर तुमको जो फॉर्मेट दिया हम दैट इज ए प्रिंटेड फॉर्मेट कि ता भीतर तुम जो फिलअप कर सब ऑन योर ओन हैंड राइटिंग निज हैंड राइटिंग दैट इज द ओनली एविडेंस ना जो तुम पार्टिसिपेट कर तुम ही मेंटेन कर टाइप तो करदे समस्ते करदे ओके सो हाँ हाँ ओके सो रफ खाता समस्ते काढ़ तो विल स्टार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो वर्ड करने आमर ये विंडो स्क्रीन रे ये आम तले कौन देखुचे स्टार्ट मेनू तो स्टार्ट मेनू पर मो माउस रो राइट बटन प्रेस करके कमांड अच्छी कौन सर्च बॉक्स तो सर्च बॉक्स रे ये सिंपली मो प्रोग्राम रो ना लिखुची दैट इज कॉल्ड वर्ड जदियो एक्चुअल प्रोग्राम ना कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किंतु आमको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखार किसी आवश्यकता नहीं आम जमती एक्सप्रेशन कर तुम जमती प्रोनाउंस कर जस्ट नॉर्मल वर्ड लिखिक एंटर की प्रेस कले भी काम आमर कंफर्टेबली हम ओके सो जिते वर्ड लिखिक मुझे एंटर की प्रेस करुच्ची जस्ट सी ये प्रथम आम स्क्रीन में कौन देखुचे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ये आसिले ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आसिला ये तुम बेसिक स्क्रीन लेआउटा तुम आगे बुझी दियो सब टॉप ऑफ द लाइन ये कौन लिखाई डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1 वर्ड अच्छा एनीबडी कहि परिबो जो डॉक्यूमेंट 1 आउ वर्ड जो शो करूची आमर स्क्रीन रो ए एरिया को कौन कुआ जाए व्हाट इज इट कॉल्ड जे जहाँ भाव कोई जस्ट डिस्कशन किसी परीक्षा होनी जहाँ भाव कह डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो दीटा लाइन लिखाई आई थिंक समस्त देख पड़ो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्निकली आपको कौन कुआ जाए व्हाट इज इट कॉल्ड यस हेडर ओके एनी अदर सजेशन कौन पूनम कौन कुआ जाए निहारिका ओके रियंका कौन कुआ जाए को फिरदौस स्क्रीन रो जो बाटा देखेली आपको कौन कुआ जाए एनी आइडिया आई मीन दिस एरिया बर्तमान समस्त स्क्रीन में देखी पड़ो टॉप ऑफ द लाइन ये कौन लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज इट कॉल्ड एक्चुअली आम जो वर्ड रे आरंभ कर तुमको आग बेसिक स्क्रीन लेआउटा विषय किसी नॉलेज दूसरी कौन से जोन को कहा जाए दिस इज कॉल्ड टाइटल बार ओके दिस इज नोन एज टाइटल बार ओके टाइटल बार को ये कहूँ दैट इज टाइटल ऑफ द फाइल एंड टाइटल ऑफ द प्रोग्राम दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टाइटल बार आमर प्रोग्राम ना कौन वर्ड दैट इज टाइटल ऑफ द प्रोग्राम डॉक्यूमेंट 1 दैट इज द नेम ऑफ द फाइल ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट 1 टाक हम लेटर ऑन ना चेंज कर परिबा जत ताको कमांड दे के हम कंप्यूटर हार्ड डिस्क रे सेव करबा स्टोर करबा बट फिलहाल मु जेते थरो वर्ड खोलिबी मोर प्रथम कोन देखला डॉक्यूमेंट 1 तापर देखो डॉक्यूमेंट 2 तापर डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट 4 लाइक दिस सो ऑन चलिबो अनलेस एंड अनटिल यू सेव इट आमे तो ताको कमांड दे के स्टोर कर दवा सेव कर दवा डॉक्यूमेंट 1 टा ऑटोमेटिकली हमर सेही ना को चेंजेस हे जो सो लॉजिकली योर फाइल हैज बीन क्रिएटेड बोले बट बर्तन आमने को स्टेज रे अछि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फाइल ओके तो जोठी हमर फाइल ना देखौछि एवं प्रोग्राम ना देखौछि दैट एरिया इज नोन एज टाइटल बार एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट तले जो हमर लिखा है फाइल इंसर्ट ड्रॉ लेआउट
होम डिजाइन आपको कौन कह जाए एनी आइडिया जो बहुत सारे छोट छोट सब ना लिखाई आपको आम कौन कौन ओके जे जहाँ भावुच टे चैट बॉक्स रे मत रिप्लाई दियो कौन भावुच वर्षा मधु अभिलिप्सा नो आइडिया श्रुति नो आइडिया he जानना okay that is known as what menu bar okay so this is known as menu bar so the next below the title bar that is called your menu bar okay or you can call it command box so title bar below title bar next is your menu bar or you can call it command box right now बर्तमान ये जो जिते सारे मोर मेनू लिखाई फाइल इनसर्ट ड्र जो मुझे इच मेनू पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करुच मेनू पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करुच्ची तले देख बहुत सारा ऑप्शन चेंजेस हो जो चेंजेस हो व्हाट इज इट कॉल्ड टूल बार चॉइसेस ऑप्शंस ओके सो द नेक्स्ट जोन दैट इज नोन एज टूल बार और यू कैन कॉल इट option box okay toolbar choices or you can call it option box so the question come why I am showing all these things what is the utility of menu bar what is the utility of option or choice box because जदियो तुम समस्ते सिस्टम रे किसी काम करिया को जाउछ और काम भी सिखुछ मोर ले समस्ते किसी किसी जानिछ बट कंप्यूटर रो सबटु बड़ माइनस पॉइंट हैला कोन what is the major drawback of his system no idea of course आम तो रनिंग अवस्था अच्छु डाटा तो सेव हेनी अनलेस यू सेव इट से मैंने कौन कर कंप्यूटर को रिमेम्बर करोच ओके बट दैट इज ए सेपरेट इश्यू मोर वेरी सिंपल क्वेश्चन व्हाट ए कंप्यूटर कैन नॉट डू कंप्यूटर कौन करें इनपुट नो आउ कौन भाव व्हाट ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एमती गोटे एक्टिविटी को जो कैपेसिटी कंप्यूटर नाही That's right. Computer doesn't have any feelings, emotions, or thinking capacity. तो बहुत सारे जिनस कहल कंप्यूटर एमती दब सेमती दब एमती काम करिवो बट कैन ए कंप्यूटर थिंक हु मेड द कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग मेड द कंप्यूटर और कंप्यूटर मेड द ह्यूमन बीइंग तो हु इज प्राइमरी हु इज सेकेंडरी ह्यूमन बीइंग इज ऑफ कोर्स प्राइमरी कंप्यूटर इज सेकेंडरी कंप्यूटर प्राइमरी केतरे जो जत्र कंप्यूटर भाबिया शक्ति आसी जीवो एवं दैट इज डिजास्टरस कारण कंप्यूटर जदी इमोशन थिंकिंग आसी जीवो कंप्यूटर कौन पड़ेबो अप लेवल को पड़ेबो आमे सेकेंडरी लेवल को पड़े आसीबा तुम कंप्यूटर कहबो मते बर्तन पानी ग्लास दे कहबो मोर इच्छा नाही मु देबिनी मते गीत सुना दुटा बॉक्सिंग बसेबो नॉट डन से कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स आमर कामटा को फास्टर कर दबो स्पीड अप कर दबो बट मन किसी कर सो करोछि कि वी द यूजर आमे कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल टाइम टू टाइम कमांड पर कमांड दे चलीछे एवं कंप्यूटर हमको डिजायर्ड आउटपुट लेस पॉसिबल टाइम विथ लेस एरर से हमको बाहर करके दे दोछि तेणु जो क्वेश्चन आसला आमे ताको इंस्ट्रक्शन दोचे वेयर कोठी इंस्ट्रक्शन दबा का थ्रू द मेनू बार और कमांड बॉक्स तो मेनू बार और कमांड बॉक्स को हमें ओपन अप कला पर ही हमर डिजायर्ड आउटपुट पाया पे हमें कंप्यूटर को रिक्विजिट कमांड दे पारुछे देन ओनली यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग द एक्चुअल आउटपुट दैट यू वांट टू गेट जो आउटपुट हमें पाया को चाहूँ हमें प्रॉपर्ली आउटपुट पाई परिया एवं मेनू बार भीतर तो गोटे जिनिस देखिबनी मेनू बार भीतर लॉट ऑफ फंक्शन फीचर्स आर सब देयर जोटा को चॉइसेस कारण मे बी ऑन द होल गोटे मेनू ही पारे ता भीतर हमर 50 प्रकार कमांड आछे सब फंक्शन
ताको कह जाउछि टूल बार और चॉइस बॉक्स। देन बर्तन जो व्हाइट बेसटा देखुचे व्हाइट बेस आगु कौचे कौन राइटेबल एरिया जहाँ ऊपर आम किसी डाटा एंट्री करने जाऊे एंड बॉटम लाइन आमर जो तले जो गोटे ब्लैक हॉरिजॉन्टल बड़ बार देखुचे व्हाट इज इट कॉल्ड नो स्क्रॉल बार तो तुम वर्टिकल एपटे पड़ेगा रे दिस इज कॉल्ड टास्क बार दिस इज कॉल्ड टास्क बार टास्क टू डू TASK टी तल तल जो ब्लैक लाइन जो स्टार्ट मेनू जो अच्छी ये जोनटा दिस एरिया स्क्रीन रो एरियाटा सभा बॉटम जो ब्लैक बॉक्स देखु ना दिस इज कॉल्ड व्हाट टास्क बार टास्क टू डू currently what you are doing you are in internet you are in word you are in excel you are in powerpoint or whatever जहाँ भी तुम काम कर तुमको टास्क बार रू ही लिंक मिले ओके टास्क TASK that is called task bar okay task bar to do बर्तमान बुझ पार टाइटल बार मेनू बार टूल बॉक्स एंड टास्क बार आमर एंटायर विंडो टाको आम 4टा जोन में डिवाइड करदे बर्तमान पड़े आस राइट बॉटम कॉर्नर को सॉरी राइट टॉप कॉर्नर ये 3टा सिंबल देखो गोटे माइनस साइन अच्छी गोटे डबल बॉक्स साइन अच्छी गोटे क्रॉस साइन अच्छी कारण ये जो ऑप्शन को तुम देखो दीज आर स्टैंडर्ड द सेम थिंग इन पावर पॉइंट द सेम थिंग इन एक्सेल व्हाट एवर द प्रोग्राम तुम जहाँ भी खाली प्रोग्रामर ना बदल प्रोग्रामर अलग अलग एप्लिकेशन बदल बट दिस थिंग्स आर कॉमन सब गोटे जिन ओके सो माइनस पाखे जो माउस रखिली देख मेसेज कौन आसला मिनिमाइज माइनस पाखे माउस रखिले मेसेज आसला कौन मिनिमाइज जो डबल बॉक्स पाखे माउस रखिले हमर मेसेज कौन देखुँ रेस्टोर डाउन क्रॉस पाखे रखिले मेसेज आसूसी क्लोज सो नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमाइज रेस्टोर एंड क्लोज व्हाट इज द मेन डिफरेंस एक्चुअली दिस 3 टूल्स ये 3टा टूल भीतर हमर बेसिक डिफरेंस कौन मिनिमाइज मीन्स छोटो कर देबा अच्छा छोटो दी करबा व्हाई एंड हाउ एंड वेयर कोठी करबा बॉटम बार मतलब टास्क बार व्हाट यू मीन टू से यू आर नॉट क्लोजिंग द फाइल द और द जॉब यू आर करेंटली ऑपरेटिंग यू आर सिंपली मिनिमाइजिंग एंड हाइडिंग इट एट समवेयर सो दैट जिते आम फ्यूचर दरकार हम आम पुणी क्विकली रिओपन करके कामटा को कंटिन्यू कर पार सो दैट इज द पर्पज ऑफ मिनिमाइजेशन सो हियर आई एम मिनिमाइजिंग सी जो मुझे मिनिमाइज कली मु बर्तमान कौन देखिली व्हेयर इज माय फाइल मो फाइल गला कड़े माय फाइल इज इन द टास्क बार यस हियर इट इज मोर फाइल बर्तमान कोटू को आसला टास्क बार को आसला यस नाउ ओके बर्तमान मिनिमाइज रो ऑप्शन जानि परलो व्हाट इज इट्स यूटिलिटी नाउ व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेस्टोर रेस्टोरेशन रो काम कोन एटा में 3टा कमांड पाउचे गोटे ला फर्स्ट वन यू हैव सीन दैट इज कॉल्ड मिनिमाइज ओके देन नेक्स्ट आसीबो दैट इज कॉल्ड रेस्टोर ओके रेस्टोर सांगरे ता सांगरे हमर ऑपोजिट कौन आसीबो मैक्सिमाइज रेस्टोर रो ऑपोजिट हम पाइबा एठी मैक्सिमाइज देन फाइनली क्लोज so you have seen what is minimize now coming to the second part that is called restoration and maximization so now tell me what is the purpose of restoring the current file को हमें restoration कौन पे करबा अच्छा बर्तमान तुम जो फाइलटा देखुच इट इज इन फुल विंडो फुल स्क्रीन आम पूरा फुल स्क्रीन देखुच ना देख जो बर्तमान मुझे रेस्टोर कर हाफ ऑफ द स्क्रीन आम बर्तमान देखिले बट दैट शुड बी सम यूटिलिटी ना এটা তো ডিজাইন पे आमर कराहीनी आमर आर किसी ना किसी गोटे यूटिलिटी इज देयर सो व्हाट मे बी द यूटिलिटी आर यूटिलिटी कौन आसी पारे मल्टीटास्किंग मल्टी फंक्शन मीन्स मतलब तुमर 2टा फाइल को एट ए टाइम ओपन करके तुम साइड बाय साइड व्यू कर पार सो दैट तुम मॉडिफिकेशन अल्टरेशन करने इजी हम ना यूजुअली कौन अच्छी गोटे को देखा 8टा टास्क बार हाइड हो जाए बट आम तो रेस्टोर करके दीटा देखा एक्जाक्टली ये प्रोसेस रे मो बर्तमान आउटे फाइल को ओपन अप करुच्ची सपोज ये आउटे फाइल ओपन अप कली देख बर्तमान स्क्रीन आम केतरा फाइल देखु गोटे विंडो रे केतरा फाइल देखु 2 फाइल्स ना
So this is document 1, the first file हम जो start करते हैं, and this is document 2. So जेहेतु दीटा फाइल 8 पार गोटे विंडो रे हमें साइड बाय साइड देखि पारुछे, हमें ताकू कंपेयर करके प्रॉपर एडिशन डिलीशन की मॉडिफिकेशन आराम रे कर परियो. So that is the purpose of restoration of the current file. कंपैरिजन पाई ना कोन हो सब जदि फुल स्क्रीन रे रहइबो गोटे स्क्रीन रे गोटे थर रे एक कालीन हमें केतरा फाइल देखिया ओनली वन जोटा कि हमको आर फाइल से कंपेयर कला बेलू यू मे लूज द ट्रैक हमको मन रही कि जब दीटा जिनस एकाथर व्यू करवा आम कंफर्टेबली कंपेयर करके एडिटिंग कर. सो दैट इज द पर्पज ऑफ रेस्टोरेशन एंड रेस्टोरेशन अपोजिट आम कौन आसला मैक्सिमाइजेशन. सो नाउ योर फाइल गेट मैक्सिमाइज्ड मतलब यू आर सीइंग ऑल द फाइल टुगेदर इन ए सिंगल विंडो. ओके, सो दैट इज मैक्सिमाइजेशन. देन व्हाट अबाउट क्लोजिंग? Close the current file. Okay, close the current file. So coming to the close section. बर्तमान जब मुझे close command ऊपर माउस प्रेस करूँगी, इटा हमको दीटा जिनस पचारला. Name of the file you want to save on and the location where you want to save it. हमें कोडी सेव करवा एवं को नारे सेव करवा. This two is also important because जो जगह रे जो नारे हमें सेव करथिबा लोकेशन एवं नाटा जानिले भविष्य में जदि से कामटा को आम रिओपन करके देखा चाहूचे व्हाट यू डू गो टू द लोकेशन फर्स्ट सर्च द फाइल नेम क्लिक द माउस ओवर इट एंड योर फाइल कैन बी ओपन एंड फाइंड आउट. ओके, सो बर्तमान ये कौन कर फास्ट लोकेशन स्पेसिफाई कर आमर कंप्यूटर जितेटा एरिया तुम बर्तमान देखला आदर सब इजीएस्ट आसेसेबल लोकेशन कोटा माने जोठी आम इंस्टांटली जाके टच कर परिबा डाटा खोजी बाहर कर परिबा. Yes, no, yes, OneDrive मु तो बर्तन OneDrive रे अच्छी. What else? सब easiest आसे you all know समझ जानी छो. Yes, C drive सब easiest location कोटा computer screen, that is the answer. Desktop तमें जिते थर आग पछ डेस्कटॉप एरिया केते थर पास कर सब 2 and 4 डेस्कटॉप एरिया पास कर. सो दैट इज द इजीएस्ट एक्सेसिबल लोकेशन. सो इट इज वेरी नेचुरल. तमें जो टेम्पररी फाइल्स भीतर काम कर स्टोर ऑल द फाइल इन द डेस्कटॉप एरिया. हाँ तमें ताकू परमानेंटली फ्यूचर पे जब रेफरेंस कर तमें ताकू वन ड्राइव रे सेव कर कि सी ड्राइव रे सेव कर कि माय डॉक्यूमेंट्स रे सेव कर. दैट इज सेपरेट थिंग. बट रनिंग काम पे डेस्कटॉप इज द सेफेस्ट एरिया एंड इजीएस्ट एक्सेसिबल एरिया. सो बर्तमान आमर जो सेव कला से दीटा क्वेश्चन पचारा कौटी सेव कर को लोकेशन रे सेव कर. बर्तमान जो वन ड्राइव लिखाई देख बाय डिफॉल्ट आम फाइल कौटू पड़ोची वन ड्राइव को पड़ोची. बर्तमान मुझे क्लिक कली जो क्लिक कली ये कौन शो है अलग अलग लोकेशन सी आउे शो करोटी तादे गोटे लोकेशन कौन लिखाई डेस्कटॉप फोल्डर 2 ये लिखाई डेस्कटॉप सी यूजर. सो दिस इज द लोकेशन कारण यहाँ कौन हम डेस्कटॉप को जीव बट डायरेक्ट डेस्कटॉप को जीवन डेस्कटॉप रे मे बी आउ गोटे फोल्डर अच्छी जो फोल्डर ना है न्यू फोल्डर 2 ता भीतर फाइलटा पड़ेगा मे बी तुम पाई न पार से आम डायरेक्ट कौटू गले डेस्कटॉप देख लोकेशन आसीगला डेस्कटॉप. ओके, नाउ ये क्या क्लिक कर फाइल ना व्हाटएवर एक्सएक्सएक्स जहाँ भी मोर फाइल ना होता सी तापर मुझे सेव उपर क्लिक करुच्ची आपको बर्तमान ये मिनिमाइज 1 सेकेंड करदे बर्तमान आम आसी कौटू को. यस, सो दिस इज माय डेस्कटॉप एरिया ना. बर्तमान मुझे को लोकेशन में पहुँचली डेस्कटॉप रे पहुँचली जदि ये कौन देखा एक्सएक्सएक्स देखा आपको ये डबल क्लिक कले बर्तमान फाइल खोल. ओके, सो दिस इज द बेसिक लेआउट. ये लेआउट को लेकर आम काम करार अच्छे समस्ते बुझीपारे ना एनी कन्फ्यूजन कार किसी डाउट्स अच्छी ना एनी कन्फ्यूजन जदि कार किसी क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन लिख एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स जदि कार डाउट्स अच्छी जल्दी चैट बॉक्स रे लिखि पठा. विल डिस्कस एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेसन. ऑल क्लियर? नेक्स्ट मॉड्यूल जीवा. ओके, ना बर्तमान आपको मुझे डिलीट कर दूची. तुम नेक्स्ट गोटे भेरी बेसिक जिनस
जोटा कि तुम बार बार सब कम दरकार हुए जो तुम डाटा एंट्री कर जॉब वर्क तुम पशुच सब धर तुम गोटे असाइनमेंट दिगला तुमको गोटे ड्राफ्टिंग करा कहला सो ड्राफ्टिंग रे जो असाइनमेंट आसूसी मु असाइनमेंट किछटा पार्ट लिखुची ताकू नहीं आम बर्तमान गोटे असाइनमेंट करवा वार्ड रे राइट सपोज first thing what you want to do create a file which contains 3 pages आम वार्ड गोटे फाइल तैयारी करवा आम वार्ड गोटे फाइल तैयारी करा जाऊँ जो फाइल आमर 3टा पेज रहा with the below mentioned format किछटा इंस्ट्रक्शन दिया हो किछटा गाइडलाइन तुमको दिया हो से गाइडलाइन को फॉलो करके तुम गोटे फाइल टे तैयारी करो जो फाइल तुम 3टा पेज आसो एवं अकॉर्डिंगली तुम डाटा भी इनपुट कर से राइट बराबर सो आधर कौन कौन गाइडलाइन रहा फर्स्ट गाइडलाइन सेट पेज नंबर 1 फाइल केतरा पेज रहा 3टा पेज रहा बर्तमान मोर प्रथम पेज रो सेटिंग आम जाऊे बराबर सो सेट पेज नंबर 1 in A4 size page number 1 in A4 size orientation page ro orientation in vertical mode okay letter size 14 style times new roman color blue write down any 3 paragraphs okay so this is the first page setting okay so this is the first page setting paper size amar rahila A4 paper direction rahila vertical mode letter size 14 style times roman color blue with these settings write down any 3 paragraphs of your choice okay now coming to the page number 2 that is set page 2 in legal size okay legal means तुम कोर्ट पेपर देखो रेवेन्यू स्टाम्प अशोक स्तंभ लगे आसते यूजुअली टे लंबा है बोथ पार्टी को विषय जो एग्रीमेंट है कौन कोर्ट पेपर हुए एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज नो कोर्ट पेपर ताको आम कौन लीगल पेपर आमर A4 साइज पेपर डायमेंशन के रोचे 8.27 इंचेस बाय 11.69 इंचेस बट लीगल पेपर साइज के 14 इंचेस बाय 8.5 इंचेस तार लेंथ आसो के 14 इंचेस विड्थ के आसो 8.5 इंचेस okay so in the same file set the page to in legal size and orientation is horizontal okay orientation is horizontal letter size is 13 okay letter size is 13 style book antica and color is red
and write down any 2 paragraphs over it. So in the second page setting, this is the format, this is the setting, and write down any 2 paragraphs over it. And finally, set page number 3 in letter size. Set page number 3 in letter size. Then once again, your orientation is vertical, size is 11.5, style is Arial, and color is green. Write down any 2 paragraphs. Write down any 2 paragraphs over it. Where the first paragraph first line should begin 0.6 inches from the left. The line spacing should be 1.5 and the paragraph spacing should be 12 points after. Okay, so these are 3 different settings with 3 different pages, but one thing is common: all the 3 pages should be under a single file. Okay, लेखिलो समस्ते. सो दिस इज द टास्क. तुमको ये टाइप रो ही स्किल वर्क करियो पड़िबो. काम सब तुम जो शिखिछ इंटर्नशिप तुमर एंटायर तुमर सब स्किल एक्टिविटी रे ये टाइप रो ही तुमर सबडा एक्टिविटी चलिबो. ओके, कारण इनफैक्ट तुमर थ्योरी कम प्रैक्टिकल अधिक. तुमको बार बार सब प्रैक्टिकल स्किल ऊपर ही अलग अलग असाइनमेंट करा हबो. किस्टा तुम निजे करिवो, किस्टा मु तुमको गाइडलाइन भी देबी केमती करिवो. एटा तुम जेहेतु तोर फर्स्ट क्लास एटा मु टोटलटा बर्तन बुझौछि आको सॉल्व करिबा. ओके, कारण इट लुक्स वेरी इजी बट इट इज नॉट सो इजी, कारण आ भितर बहुत सारे तुमको सेटिंग करिया को अछि. जस्ट हैव ए लुक. ओके, यूट्यूब रे फोटोटा रही जाइछि, देखा होगी. कार फोटो? मो फोटो को हटे देले तो मु पड़ेले तो हैं आसला कौन माने कहा फोटो पड़ जाइछि कोन तळे जो आपनकर जो राशि फेसटा से कथा माने मत मत. कटि आउथरा तो से लाइन रडा. ओहो, अच्छा ताले मते विदा कर दो. ताले हो पळेबा आ कोन करिया. हो ठीक अछि. देखो
बर्तमान गोटे नुआ ब्लांक पेज टाक ओपन करवा अलरेडी तो आम वार्ड प्रोग्राम ओपन होकर अच्छी सो व्हेयर टू गो बर्तमान कौटू आसिले फाइल फाइल को जाए क्या क्लिक करवा ब्लांक डॉक्यूमेंट्स सो फास्ट पेज सेटिंग कौन अच्छी कह पेपर साइज Set page Margin. margin A4 size. Okay. Orientation in vertical mode enter. Okay. Size pocket. Style type. बस ठीक अच्छे शुण फास्ट थिंग देला पेपर साइजटा आमर यहाँ फाइल देख बाम पट बटम कर्नर मार्क कर ये स्टाटस कौन लिखाई 1/1 लेफ्ट बटम कर्नर देखिपार गोटे कमांड लिखाई पेज 1/1 डाण पट 1 टा है फाइल समुदाय पेज संख्या बाम पट 1 टा है करेन्टली आम को पेज रे अच्छु राइट सो आम फाइल बर्तमान प्रथम पेज रे अच्छु राइट सो प्रथम पेज सेटिंग कौन पेपर साइजटा आम A4 अच्छे ना चेक करवा से कौ मेनू को जाऊे लेआउट मेनू लेआउट भर गोटे कमांड पाइबा पेज सेटअप ओके सो पेज सेटअप रे एठी जीवा कोटू को पेपर पेपर एटी कौन लिखाई पेपर ना कौन लिखाई लेटर किंतु प्रथम पेजटा आम कौ मापर रखा A4 देख जो लेटर लिखाई तार डायमेंशन के देखा 8.5 11 आपको बर्तमान खोलिले ये मुझे चेंज कली A4 सो नाउ लेटर साइज पेपरटा मोर को साइज को कन्वर्ट हो गला A4 साइज को कन्वर्ट है अच्छा मार्जिन तो आमर कि स्पेसिफिकेशन नाला तेणु बाय डिफॉल्ट जो 1 इंच मार्जिन अच्छी लेट इट बी से था बाकी जो ओरिएंटेशनटा अच्छी पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल आमर जोटा को आम कौच कौन पेपर डायरेक्शन तुम कॉपी बर्तमान नोट्स लिखुच को मोड लिखुच टॉप टू बॉटम तुम से टॉप टू बॉटम कौच आम कहीपर पोर्ट्रेट कहीपर आम वर्टिकल भी कहीपर तो पोर्ट्रेट जहाँ टॉप टू बॉटम से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जहाँ लैंडस्केप से लेफ्ट टू राइट से एंड ओरिएंटेशन इज द अदर नेम ऑफ डायरेक्शन आम जो पेपर डायरेक्शन कौच कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कह ओरिएंटेशन में डायरेक्शन ऑफ द पेपर सो बाय डिफॉल्ट आम वर्टिकल अच्छी आउ तो आम किसी चेंज नहीं ये आम ओके कले सो पेपर चेंज हो गला देन कोटू पड़े आसिले होम मेनू भितर अक्षर स्टाइल अक्षर साइज अक्षर कलर 3टा जिनस अक्षर साइज अक्षर स्टाइल अक्षर कलर अक्षर साइज के 14 गोटे चेंज कली क्या 14 अच्छा कलर कौन अच्छी फास्ट पेज रे कलर कौन अच्छी ब्लू सो ये ब्लू कलर डायरेक्ट न जदि आसूँ मोर कलर को आस मोर कलर आसिक चूज ब्लू कलर ओके एंड स्टाइलटा कौन अच्छी लेटर स्टाइल टाइम्स रोमान आई थिंक टाइम्स ओके टाइम्स न्यू रोमान ओके दिस इज लेटर स्टाइल इज टाइम्स रोमान सो दिस इज द फास्ट पेज सेटिंग बर्तमान मुझे स्टार्ट राइटिंग फास्ट पैराग्राफ आप तुमको जहाँ कंटेंट दिखाई सेटिंग संगे देख मोर सेटिंग कलापर मोर फास्ट पैराग्राफ जिते पर्यटन मुझे एंटर मारे आई मीन 1 पैराग्राफ जिते पर्यटन मुझे एंटर मारे आई मीन 1 पैराग्राफ द मोमेंट आई एम प्रेसिंग एंटर की 1 पैराग्राफ एंड्स एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ बिगिन्स ओके एंड द सेम फॉर्मेट कंटिन्यूज आम जो फॉर्मेट जो स्टाइलटा फास्ट पैराग्राफ अप्लाई कले मोर सेम स्टाइल सेम फॉर्मेटा ऑटोमेटिकली कंटिन्यूएशन हो गला ओके सो दिस इज माय फास्ट पेज सेटिंग अज्यूम कर मोर जो फास्ट पेज रे एथि सेटिंग रे 3टा पैराग्राफ लिखबार था आई हैव डन इट नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज ओके विथ ए डिफरेंट सेटिंग ओके सो बर्तन हाउ टू मूव टू द नेक्स्ट पेज आई एम स्टिल इन पेज नंबर 1 सो एंटर 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 प्रेस करी मुझे अच्छी डाउन 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 तो चलली सो जस्ट हैव ए लुक ये आम स्टेटस कौन आसीगला पेज 2 ऑफ 2 सेकेंड पेज क्रिएशन हो गला करेंटली मो को पेज रे अच्छी पेज नंबर 2 बट माय सेकेंड पेज सेटिंग विल चेंज आर सेटिंग आम चेंज केमती करवा सेकेंड पेज रो फर्स्ट मेजरमेंट को कौन अच्छी डायमेंशन कौन अच्छी ना फर्स्ट पेज A4 कलर बा हाँ ना A4 ये ठीक कहला कारण देख जिते थर आम एंटर मारुचे कंप्यूटर कौन बुझुची योर न्यू लाइन और न्यू पेज इज द सेटिंग ऑफ द प्रीवियस पेज तो सही अनुसार मोर फर्स्ट पेजटा कौन था A4 था तो सेकेंड पेजटा बर्तमान मोर A4 को पड़े आसी बट फिजिकली मो सेकेंड पेज माप कौन रखी लीगल ओके डायरेक्शन कौन रखी हॉरिजॉन्टल ओके सो लेट अस डू इट बर्तमान 1 सेकेंड कोटू आसिले लेआउट आसिक भी कौन पेज सेटअप रे एटी फास्ट डायरेक्शन चेंज कली लैंडस्केप सो लैंडस्केप इज द अदर नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल मोड हॉरिजॉन्टल जहाँ लैंडस्केप आमर से बराबर ओके अच्छा पेपर साइज ये के देखुचे A4 बट आम आपको रखा कौ मापर लीगल रखा सो ये A4 को आई चेंज इट टू लीगल
ओके लीगलटा केते आसीगला 14/8.5 14/8.5 मार्जिन तो किसी हम कहनी तो मार्जिन जहाँ से आज था एटी ओके करने आगु एटी गोटे ऑप्शन ऊपर ध्यान दिए एटी कौन लिखा है अप्लाई टू वेयर होल डॉक्यूमेंट सो माइंड इट सो दिस इज द चेंजिंग पॉइंट a document can contain one page a document can also contain more than one pages तो मु जदि एटी बर्तन होल डॉक्यूमेंट कर देबी बर्तन मोर सेकंड पेजटा हे जीवो प्राइमरी फर्स्ट पेजटा हे जीवो सेकेंडरी बर्तन आम को मोड रे अच्छे फर्स्ट पेज अनुसार सेकंड पेज आम कंटिन्यूएशन हो जाइए A4 था A4 बर्तन मोर फर्स्ट पेज सेटिंग को इंटैक्ट रखी सेकंड पेज सेटिंग को बदलेबी ताले मोर चेंजेसटा ओवर ऑल द टू पेजेस इन ए सिंगल फाइल हम ना एक्सक्लूसिव ओवर सेकंड पेज केवल सेकंड पेज ऊपर तेणु आम ये कौन करवा ओके करवा आगु होल डॉक्यूमेंट को खोलिकी ये चेंज करिया कौन दिस पॉइंट फॉरवर्ड तामाने जो ठू कर्सर से आगो को पेजटा नुआ सेटिंग रे कंटिन्यूएशन करू ओके बर्तन कौन कले दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके जेतरे ओके ऊपर करूचे इट इज चेंजिंग सी योर फर्स्ट पेज इज वर्टिकल एंड सेकंड पेज इज हॉरिजॉन्टल फर्स्ट पेज इज A4 सेकंड पेज इज लीगल सेटा जदि होल डॉक्यूमेंट कर दबो बर्तन दीटा को पेज सेटिंगटा कोन सेकंड पेज अनुसार ही जीवो ऑटोमेटिकली तबे ना देखलो ने कि जोटा अभिलिषा कहतला A4 काहे कि से कहला कड़ा सेकंड पेजटा ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज सेटिंग को कंटिन्यूटी करतला मु बर्तन तबले कोन हमरो सेकंड पेजटा फर्स्ट ऊपर इन्फ्लुएंस हे गेला बर्तन सेकंड पेज रे होल डॉक्यूमेंट सेकंड पेजटा हे जो प्राइमरी फर्स्ट पेजटा हे जो सेकंडरी तो से सेकंड सेटिंग को प्राइमरी नहीं छी आ फर्स्ट सेटिंग को नबर किंतु मु कोन करछि फर्स्ट पेज इंटैक्ट सेकंड पेज रो डिफरेंट सेटिंग से पे कहली कोन दिस पॉइंट फॉरवर्ड तो ऑटोमेटिकली मोर सेटिंग चेंज हला अच्छा एटी बर्तन 1 सेकंड होम को पळे आसो अक्षर साइज केते अछि सेकंड पेज रे केते 13 तो डायरेक्ट पाइबनी सो मैनुअली लिखिया पड़ो 14 को काटिक डेटी केते लिखली 13 कारण देखो जो चार्ट रे देखुछ तुम कोट पाउछ 8 9 10 11 12 13 जते ऑड वैल्यू आसीबो तुमको मैनुअली लिखिया पड़ो जोटा भी तुम चार्ट रे देखोनी तुम ताको मैनुअल लिखि कि एंटर मार लिखुछ ना देखो देखो ए जो बॉक्स रे एट लिखिल ना 13 लिखिकी एंटर मार दो कारण एंटर मारले सेटा इफेक्टिव हो न इफेक्टिव होबनी देन स्टाइलटा कोन अछि बुक एंटिका देखो ये हमारा स्टाइल अच्छी बुक एंटिका ओके कलर कौन अच्छी रेड ओके कलर रेड एंड नाउ डन नाउ राइट डाउन एनी 2 पैराग्राफ्स ओके सी मोर फर्स्ट पेज रो सेटिंग टोटली डिफरेंट आसला एंड सेकंड पेज रो सेटिंग पूरा मोर अलग अलग जाउछ सो दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ एंड एंटर नाउ दिस इज सेकंड पैराग्राफ ओके चल रहा मोर नाउ सेकंड पेज सेटिंग इज ओवर ना टेल मी मु जदि ए अवस्था बर्तन थर्ड पेज को जीवा चाहिए कौन करी एंटर की प्रेस करी थर्ड पेज को जीवा चाहिए बर्तन मु कौन करी एंटर की प्रेस करी ओके अच्छा सेपटा स्टूल अच्छी ना टिके बस देवी क्लास सारी दिए ऑनलाइन क्लास रे बसी तो बस बस ओके नाउ मत बर्तन निहारिका कह मु सेकंड पेज रु थर्ड पेज को जीवी थर्ड पेज रे को पेज रो सेटिंग रहइबो फर्स्ट पेज रो सेटिंग रहइबो ना सेकंड पेज रो सेटिंग रहइबो जहाँ भावुच को एटा किसी परीक्षाटे करा होनी रे जस्ट डिस्कशन अच्छा करेंटली बर्तन मु को पेज रे अछि सेकंड पेज रे मु एंटर मारला परे जेतरा सेकंड पेज रे स्पेस सरिबो कर्सर ऑटोमेटिकली कोड जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस दैट इज ऑब्वियसली द पेज नंबर 3 सो पेज नंबर 3 रे को पेज रो सेटिंग टा इफेक्टिव होबो पेज 2 ऑब्वियसली पेज 2 ना पेज 1 केमति आछो पेज 1 इतिहास हो गेलानी अब पेज 1 नाही हम बर्तन करेंटली कोड हमरना कमांड देले दिस पॉइंट फॉरवर्ड त माने फर्स्ट पेज इज गॉन सेकंड पेज इज ऑन मु बर्तन सेकंड पेज रो सेटिंग टा ही मोर कंटिन्यूएशन करूछु ओके बट थर्ड पेज रो ऑफ कोर्स मु सेटिंग चेंज करबी किंतु जत्र मोटे एंटर करके प्रोसीड करके पेज नंबर 3 को एटी प्रोसीड करूची मोर एक्चुअली देखो एटी मु हॉरिजॉन्टल करि नथली किंतु से हॉरिजॉन्टल आसी गला कारण योर थर्ड पेज इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ योर प्रीवियस सेटिंग दैट इज पेज नंबर 2 ओके बर्तन पळेस आमे एटी स्टेटस के देखला 3 of 3
तामाने टोटल फाइल भितरु हमर तीनटा पेज तैयारी छै एवं करेंटली हम को पेज रे अछु पेज नंबर 3 रे अछु बराबर बर्तन पेज नंबर 3 रे सेटिंग को पेपर साइज को साइज को लेटर साइज 11 पॉइंट हमर पेपर साइज केते थर्ड पेपर रो साइज जोटे दिया हितला आई थिंक लेटर रो दिया हितला लेटर साइज तो हाँ लेटर नंबर 3 हाँ लेटर एटी बर्तन मु चेंज कली पेज साइज का लेटर ओके लेटर को चेंज कले बर्तन मार्जिन को पड़ा मार्जिन तो कि चेंज नहीं खाली डायरेक्शन टा ओरिएंटेशन को अच्छे वर्टिकल ओके वर्टिकल डन अगेन एटी कौन लिखा है दिस सेक्शन नो दिस सेक्शन अगेन दिस पॉइंट फॉरवर्ड कारण दिस सेक्शन बोले सेमती नहीं दिस सेक्शन कले भी सब ऊपर पुणी पड़ी पड़ेगा ओके आपको बर्तमान चेंज करवा दिस पॉइंट फॉरवर्ड आपको बर्तमान मुझे सेटिंग कौन चेंज कली दैट इज दिस पॉइंट फॉरवर्ड ओके ताले एठी हमर पेपर साइज कोन नेले लीगल टू लेटर चेंज हे गला मार्जिन एठी हमर कोन कले हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर दले एवं दिस सेक्शन दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके एतलो ओके करूची नाउ सेटिंग इज चेंजिंग नाउ सी दिस इज व्हाट आई मीन हां डिफॉल्ट सेट देला मेजॉरिटी ऑप्शन दिला सेट एज डिफॉल्ट नो सही दिस पॉइंट फॉरवर्ड कारण डिफॉल्ट कर दले कोन हो से सेकंड रो कंटिन्यूएशन रह जो तुम तो फर्स्ट पेज रे नाउ ना बर्तन तुम सेकंड टा प्राइमरी आ जाई छी तो डोंट प्रेस डिफॉल्ट दिस पॉइंट फॉरवर्ड सेम कमांड दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके हम प्रोसीड कर देखो दिस इज पेज 1 दिस इज पेज 2 दिस इज पेज 3 दिस इज A4 दिस इज लीगल एंड दिस इज लेटर ओके बुझ पालो समझते नाउ हम बर्तन आधरे कोन आसीबा होम मेनू एटी अक्षर साइज केते अछि 11.5 सो 13 को काटी के लिखली 11.5 एंड एंटर बर्तन स्टाइल टा हमर कोन अछि एरियल देखो एटी कोन लिखा अछि एरियल किंतु जतले थर्ड पेज रे हम बर्तन दुईटा कि तीनटा पैराग्राफ लिखिबा एटी हमर आउ किछटा नुवा सेटिंग भी अछि हम एटा पैराग्राफ सेटिंग भी करे पड़िबो ओके बट बिफोर दैट एटी हमर अच्छा कलर कोन अछि ग्रीन थर्ड पेज रे एटी कलर मु दे देली ग्रीन तो साइज है 11.5 स्टाइल है एरियल कलर है ग्रीन एवं आधे जिते बर्तन मो पैराग्राफ लिखी मु चाहूँगी मोर पैराग्राफटा एभलिया सेटिंग रे क्रॉस आगू को चलू कौन सेटिंग रे आगू को जीव प्रति पैराग्राफ रो फर्स्ट लाइन टा बाम पट मार्जिन रू राइट हैंड साइड को 0.6 इंचेस भीतर को जीव फर्स्ट पॉइंट प्रति पैराग्राफ भीतर किसी डिस्टेंस रखिबा प्रति लाइन भीतर किसी डिस्टेंस रखिबा सेतमे हमको वंस अगेन होम मेनू भीतर एटी एंट्री करिया पड़िबो कोटू को पैराग्राफ होम मेनू में एंट्री कले कोटू को पैराग्राफ देखो पैराग्राफ तो खोलिली एटा हला तमरो गोटे पैराग्राफ रो डमी मॉडल से देखौची एटा पैराग्राफ से कोन देखौची डमी मॉडल देखौची एपटो पॉइंट को टच करिवोनी कारण एपटे आम जहाँ सेटिंग करवा सेटा ऑटोमेटिकली चेंजेसटा रिफ्लेक्शन हम क्या आ रिफ्लेक्शन हम कि एपटे जहाँ चेंज कर नेगेटिव आसपे फास्ट प्रति पैराग्राफ फास्ट लाइन टा कौन अच्छे मार्जिन रू चली आम बर्तमान जो स्पेशल अच्छी काटिक पकड़ी कौन फास्ट लाइन एटा 0.5 इंचेस अच्छी कली 0.6 इंचेस सो व्हाट आई एम सेटिंग हियर ये मुझे कौन सेटिंग चेंजेस कले आगो को ए पेज रे जितनी पैराग्राफ लिखी प्रति पैराग्राफ फास्ट लाइन टा बाम पट मार्जिन रू डाहाण को केते इंच भीतर को जीव 0.6 इंचेस भीतर को रिमेनिंग लाइन्स इन द पैराग्राफ मोर मार्जिन टू कंटिन्यू करिवो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ओके एटा ला मोर प्रथम क्राइटेरिया देन हमर सेकंड क्राइटेरिया हमर कोन आसीबो हमर ओके व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरिया मोर जो पैराग्राफ लिखिबी प्रति पैराग्राफ रो थिबा लाइन भीतर केते डिस्टेंस अछि आमे केते डिस्टेंस रखिया को चाहू दैट इज कॉल्ड व्हाट लाइन स्पेसिंग तो बर्तमान लाइन स्पेसिंग केते अछि हमर सिंगल लाइन अछि 1.5 लाइन अछि आमे तो केते पकड़ा 1.5 लाइन्स 1.5 लाइन देन प्रति पैराग्राफ भीतर केते डिस्टेंस अछि आमे तो केते डिस्टेंस दवा को चाहू दैट इज 12 पॉइंट आफ्टर तुम आइदर सेटिंग कर आफ्टर और सेटिंग कर बिफोर कारण गोटर जोटा आफ्टर नेक्स्ट में सेटा कोन बिफोर ओके तो दिस इज द थर्ड पैराग्राफ फाइनल सेटिंग मोर फर्स्ट लाइन टा 0.6 इंचेस फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स राइट मूव ऑन करिवो लाइन स्पेसिंग मोर एतिक डिस्टेंस रहइबो एंड पैराग्राफ स्पेसिंग एतिक डिस्टेंस रहइबो एंड ओके एंड नाउ स्टार्ट एंटरिंग डाटा नाउ सी दिस इज द थर्ड पेज थर्ड सेटिंग जॉब वर्क
सो दिस इज माय देखो मोर फर्स्ट लाइन केते आसला 0.6 से गैप आसला ओके एंड सेकंड पैराग्राफ मोर सेम फॉर्मेट सेम स्टाइल कंटिन्यू मोर लाइन स्पेसिंग केते आसुची 1.5 पैराग्राफ स्पेसिंग मोर केते आसला दिस इज 12 पॉइंट आफ्टर सो नाउ आम जो असाइनमेंट स्टार्ट करते दिस इज द आंसर ओके बुझिपार तेना ये टाइप ही तुमको जॉब फील्ड रे काम करा पड़ो यहाँ ये देखिए तुमको समटाइम जो तुम जॉब रे बस सब खाली तुमको प्लेन टेक्स्ट लिखा हम सेमती किसी माने ना टेक्स्ट सांगे टेबुलर फॉर्मेट भी आसो देख आम बाय डिफॉल्ट आम समझ जाने पेपर आम कौ डायरेक्शन रोचे वर्टिकल रोचे अच्छा वर्टिकल है कौन वेटटा कम हाइटा आम अधिक आसला धर गोटे टेबुल टेबुल तो जापर ग्राफ पेपर टेबुल ग्राफ पेपर टेबुल ड्राइंग कर वर्टिकल कर होरिजेंटल कर ताकू कौन टेबुल 20 कॉलम्स 20 रोज 20 कॉलम्स 20 रोज बट टेक्निकल प्रॉब्लम कौन आसो आम ये गोटे काम करुचे सब पेपर आम स्टैंडर्ड ऑफिशियल साइज रे काम हम सब पेपर साइज कौन A4 ये तुमको गोटे भेरिएशन देखार था से तीन पेपर तीन सेटिंग काम कली बट प्राक्टिकली दिस इज नॉट हैपनिंग प्राक्टिकली गोटे मापर पेपर ही सब कौन आइदर लेटर और A4 और लीगल एमती मिक्सअप होती कौटी हुए किंतु से जगह तो इश्यू आम बाहर इश्यू कौन बाहर मोर फास्ट पेज नॉर्मल मु 5टा पैराग्राफ लिखी सेकेंड पेज रे मत गोटे बिग टेबुल दिगला जोटा कि 25 कॉलम्स 30 रोज आसुदी वर्टिकल मोड रे काम करुँची प्रोब्लेमटा कौन हो मोर 30 कलम डाटा रोटा एडजस्ट हो कारण लेंथ आम अधिक स्पेस अच्छी पर 30 कलम डाटा तो आकोमोडेट हो पार आमको आज पेपर साइज बड़ नहीं पारानी ताले करवा केमती काम पेपर साइज सीना बड़ नहीं पारानी पेपर डायरेक्शन तो बदल पार डायरेक्शन बदले कौन हम हाइट बिकम्स योर विड्थ बिकम्स योर हाइट दर्घटा प्रस्थ हो प्रस्था दर्घ हो तेना बिना पेपर साइज चेंज करी भी सेम पेपर आम अधिका स्पेस तैयारी करें एवं लार्जर टेबुल भी आम वेल आकोमोडेट हो दिस इज प्रैक्टिकल रियल लाइफ जॉब वर्क तुमको एक्चुअली ऑफिशियल बेसिस तुम काम कर ये टाइप सिचुएशन तुमको बार बार आसो ताकू तुम केमती टैकल कर ये सब छोट छोट ट्रिक अप्लाई करके तुम काम कंफर्टेबली कर अंडरस्टूड ना एनी कन्फ्यूजन कार जदि किसी कलर पैलेट जो अपन ले करथिले ब्लू की ब्लैक की ग्रीन यस 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 कलर पैलेट रे तो ग्रीन रो बहुत सारा वेरिएशन अछि को ग्रीन नॉर्मली शुण देख नॉर्मली फ्रैंकली स्पीकिंग आमर कहू गले एत तो कलरफुल कौटे आसेनी ऑफिशियल काम ब्लैक एंड व्हाइट रे काम हुए अपन ऑप्शन ना मु शुण तुमको गोटे असाइनमेंट भितर मु 10टा ऑप्शन देखिली कौन मु चाहूँगी तुम 10टा स्किल शिख से हिसाब से देखिली बट रियल फील्ड रे गोटे मोड रे ही सब काम हुए ओके तापरे बाकी जदि कहला कलर स्पेसिफिकेशन तुमको क्वेश्चन दिज्व ये टाइप तुम क्वेश्चन भी आसीपे कि जॉब वर्क आसीपे देख ये मु कलर बॉक्सटा खोलिली देख जस्ट हाव ए लुक गोटे कलर ना देखा ग्रीन एसेंट 6 पूरा पर्टिकुलाली ये स्पेसिफिकेशन तुम पचार ना ग्रीन नंबर 10टा वेरिएशन देखा तेणु जदि से गोटे स्पेसिफिक वेरिएशन कलर चाहते आमको इंस्ट्रक्शन भी देवे ना आम थोड़ी जापर से लाइट ग्रीन खोजुची ना मीडियम ग्रीन खोजुची ना डार्क ग्रीन खोजे हाउ विल नो नॉट पॉसिबल सी आमको इनपुट दब ना जे मोर कलर रेंजटा यही क्वालिटी दरकार बस तुम किसी क्लिक कर दरकार नहीं तुम सिंपली जहाँ पर माउस रख देखिए माउस रखिली कौन शो कला ऑरेंज एसेंट 2 एटी कले कौन से शो कर डार्क ब्लू टेक्स्ट 2 लाइटर 75 सो ईच एंड एव्री कलर स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी से आमको शो कर डोंट प्रेस इट कारण प्रेस कले से इफेक्टिव हो सिंपली पुट द माउस ओवर इट लाइटली खाली लाइटली ताको स्क्रॉल करे तार हला जदि तुमको स्पेसिफिक दिया है तुम कलर बॉक्स को जीव कलर पाइब नथिंग रॉन्ग ना अदरवाइज बाय डिफॉल्ट दैट इज ऑलवेज ब्लैक ओके ब्लैक ही रहिबा आउ कहार एनी क्वेश्चंस आउ जी अच्छा ऑनलाइन पिला माने आउ कहार किछि क्वेश्चन अछि जदि पचारो एनी डाउट्स अच्छा आज तुम सब ऑनलाइन भी काफी कम पिला आज बेसी पिला आज ना ओके ठीक अच्छे तुम जी ऑनलाइन कर ऑफलाइन कर तुम तो 2टा प्रोविजन दिखाई कारण तुम अटेंडेंस रेकर्ड होची सो बी केयरफुल
ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କର, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବ। ଫିଜିକାଲି ଯଦି ପର୍ସନାଲ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନ ଆସିପାରିଲେ ବି କମ୍ ସେ କମ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକିରି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦିଅ। ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲା ହେଲା, ତମର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ, ତମ ପାଇଁ ହିଁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ତାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନ ନେବ, ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଲା ପରେ ବି ତମେ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିବ ଅନଲାଇନ୍ କି ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଭରସା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆଉ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତିକି ହେବ ମୁଁ କରିବା କଥା କରିବି, ବଟ୍ ତମମାନଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ବି ତ ଦରକାର ନା। ତମ ବିନା କୋଅପରେସନ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି କାମ? ତାହେଲେ ଆଜି ଯାହା ଯାହା କରାହେଲା ସମସ୍ତେ ରଫ୍ ନୋଟ୍ କରିଛ, ତାକୁ ଡେ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ କର। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ସେସନ୍ ଆମର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଡାଏରୀ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେବି, ତାପରେ ତୁମେ ଡାଏରୀରେ ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରନ୍ କରିଯାଅ, ସାର୍ ସେଇଥିରେ ଏତିକି ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି ନା? ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ 2 to 3 ଲାଇନ୍ସ। ଏଇଟା ତମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତମର ନୋଟ୍ସ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଲା, ଡାଏରୀ ଜଷ୍ଟ 2-3 ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତୁମେ କ'ଣ କଲ, 2 to 3 ଲାଇନ୍ସ ଲେଖିବ। ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଯେ ମଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ରଖ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ପଶିଲ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ ବାହାରିଲ, ଟାଇମ୍ଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କର, ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଏମରେ ତ ଆସିଛି। ଗଲୁ 2ଟା ବେଳକୁ କେତେଟା ଯିବାଟା ରଖିବ? ଯିବାଟା କେତେଟା ରଖିବ? ହଉ 4 ଘଣ୍ଟା ପକେଇବୁ ନା? ତୁମେ 4 ଘଣ୍ଟା ପକାଇବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ତୁମର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଥିଲା, ନା ଇନିସିଆଲି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ସେସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଆଉ ସେଥିରେ କହିବନି ସାର୍ ଅଣ୍ଟା କାଟିଲାଣି, 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, କ'ଣ କରିବୁ ନିହାରିକା, କ'ଣ ହେବ ତ? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। Okay, that's all for today. Tomorrow same time we'll meet again at 10:15. Okay, bye. ସାର୍ ମୁଁ ଖାଲି କାଲି ଦଶଟାରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଥିରେ ପଳେଇ ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେବ। ହଁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଜଏନ୍ ହଁ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେବ ମଷ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, ବାଏ।